Hello, this is the video number 4 or the lecture number 4 for the class 12th. The chapter is determinants we are discussing, and in the last lecture we have discussed up to question number 7 of exercise 4.2. Now we'll discuss the remaining questions. In question number 8, the determinant is given as this. Now see each column here very carefully. First row is 1 1 1 a b c and a square b square c square. Now, what is the basic concept for to solve the determinants? We try to make the any two elements of any row or column to 0. Oh, sorry. First of all, try to make it 1. Then try to make the any two element of that particular row be 0. Then expand it. This is a basic concept. We try to make it. We try to make the any row or column of the determinant 1 and then make the two elements 0. But in this question, the first row is already given as 1. So we try to make any two element of this determinant will be 0. Then we'll expand it. So we can easily make these two elements 0. R2 minus R1 you will get 0. R3 minus R1 will get this 0. So simply use the property R2 minus R1 and R3 minus R1 to any row or column. A scalar multiple of any other row or column can be added. This property we have done 2 times in the elementary transformation method to find the inverse and in the properties of the determinants. So by subtracting R2 minus R1, 0, B minus A, B square minus A square, 0, C minus A, C square minus A square. You are getting this. Now see it very carefully. You are getting B minus A common from the second column. Oh sorry, second row. See it very carefully. For this you can write B plus A, B minus A. And you can take C minus A common from the third row. Third row में से आपका C minus A common आ रहा है. So take common. From this you take B minus A common, so you will get 0, 1 and B plus A. Why B plus A? Because for this you can write B plus A, B minus A, and we have taken B minus A common. Similarly from this row we have taken C minus A common, so it comes out to be 0, 1 and C plus A. Now see it very carefully. See it. Now we can expand it very easily now. I am expanding it along the first column because the two element of this column is 0. तो केवल मुझे इस element को इसके cofactor से multiply करना है like the column and row. You know it how to expand. So before doing these questions, you must know how to expand the determinant very well. Otherwise, it will be a difficult question for you. So I am expanding along the first column to element multiply with its cofactor. Cofactor इसका positive ही होगा and 1 B plus A, 1 C plus A, and solve this 2 by 2 determinant. This into this minus this into this. You are getting this. A से A cancel. You are getting B, C minus B. So B minus A, C minus A, and C minus B. Now you can take minus common from this and minus common from this. So it becomes A minus B. This becomes C minus A already there, and it becomes B minus C. It will be plus. So like this you have to expand these types of questions. Try to make all the elements of any row or column to 1 and then make two elements of that particular row to 0, row or column to 0, and then expand it. Now I'm telling you it again that in solving the determinants you can use either row or column. कहीं अगर आपने रो से स्टार्ट करा तो आप कॉलम में प्रॉपर्टी लगा सकते हैं. बट इन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड टू फाइंड द इनवर्स, so there I told you that if you have started by taking the properties in rows, then you have to only use the property in rows for the full question. And if you have started with the columns, you have to use the property in the column only. But in these types of question determinant, if you have used the property somewhere in rows, so in the next you can use the property in the columns. It doesn't matter. Similarly, in the second part, somewhat lengthy question than this. Already we have all the element of the first row as 1. 1 1 1, so you make these two elements 0. How can you make it 2 0? C2 minus C1 you will get 0 here. C3 minus C1 you will get 0 here. See it. तो जैसे आपने इसमें से इसको माइनस करा तो this becomes B minus A, this becomes BQ minus AQ, this becomes 0, this becomes C minus A, and this becomes CQ minus AQ by using this property. Now what is the formula for AQ minus B cube? AQ minus B cube formula होता है A minus B, A square plus B square plus AB. AQ minus B cube again, A minus B, A square plus B square plus AB. तो see it very carefully. You are getting B minus A common from the second column. इस वाले क्वेश्चन में रो में कॉमन आया था. इस वाले क्वेश्चन में you are getting from the second column common B minus A and C minus A common from the third column. See it. I have taken common. तो ये बचता है कॉमन लेने के बाद. यहाँ पर ये बचेगा, यहाँ पर ये. Now again you expand it along the first row क्योंकि इसके दो एलिमेंट 0 हैं.
एक्सपेंड इट अलॉन्ग द सेकंड रो, फर्स्ट रो सॉरी। तो ये एलिमेंट है, इसका कोफैक्टर ये है, तो क्या आएगा 1 1, इसका कोफैक्टर 1 1 दिस। ना एक्सपेंड दिस डिटर्मिनेंट, एक्सपेंड दिस डिटर्मिनेंट, तो कितना आएगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यू आर गेटिंग दिस। नाउ यू हैव टू मेक द फैक्टर्स ऑफ दिस, इसमें a से a कैंसिल हो गया, दिस तो c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी ए माइनस ए बी, तो यूज द फॉर्मूला c प्लस बी सी माइनस बी, यू टेक कॉमन a है और c माइनस बी, तो यू आर गेटिंग c माइनस बी कॉमन है, यहाँ पे c माइनस बी कॉमन आ रहा है, ये कॉमन ले लिया, तो क्या बचता है a प्लस बी प्लस सी है, और यहाँ पे यू कैन अरेंज बाय टेकिंग द माइनस कॉमन टू गेट द राइट हैंड साइड। So the same concept that you try to make any two element of a particular row or column to 0, then expand it, So this is the question number 8, second part of the exercise 4.2, and see it very carefully once more. Try to make any two element of a particular row or column 0 and then expand. Now after this, question number 9. Now again this is somewhat good question. See it very carefully. You are not having a 1 or 0 or some relation between the any row or column. So see it very carefully. Now if you subtract R2 minus R1, R2 minus R1 करिए, what you are getting y minus x, y square minus x square, zx minus yx. Subtract R1 from R3, तो R3 minus R1, Z minus X, Z square minus X square, XY minus YZ. This property I have used. R2 minus R1, R3 minus R1. So you are getting this. Now see it very carefully. I am getting Y minus X common from this. Second row में से Y minus X common आ रहा है. Third row में से Z minus X you are taking common. This. तो यहाँ you will get 1 here. यहाँ पे क्या बचेगा y प्लस x, ये बचेगा। नाउ इसमें से y माइनस एक्स यू आर टेकिंग कॉमन, तो z यू विल गेट z है रादर माइनस z, क्योंकि यू आर टेकिंग y माइनस, क्योंकि इसमें से z कॉमन लेने पर x माइनस z बच रहा है, सॉरी x माइनस y, बट यू हैव टू टेक y माइनस x कॉमन, तो इट विल बी माइनस z। सिमिलरली इन द थर्ड रो, now you can make common or rather make this element at 0, R2, R3 minus R2 करने पर यहाँ पर 0 आ जाएगा, because we try to make the any two element of a particular row or column be 0। तो एक तो यहाँ पर आसानी से यहाँ 0 we are getting, R3 इस रो में से ये रो सब्ट्रैक्ट करिए, R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R2, तो यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है y माइनस z आ रहा है, यहाँ पर y माइनस z आ रहा है, और आसान हो गया। now what you are getting here, z माइनस वाई कॉमन आ गया इसमें से, दिस यू गॉट 0। नाउ यू कैन एक्सपेंड, अब आप इसको एक्सपेंड करिए। नाउ हमारे पास यहाँ पर अब टू एलिमेंट्स आर नॉट 0, तो एक्सपेंड इट कॉशियसली। सो आई एम एक्सपेंडिंग अलॉन्ग द फर्स्ट कॉलम, तो दिस एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय इट्स कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर नेगेटिव होता है तो -1 मल्टीप्लाई बाय इट्स कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर क्या आएगा दिस, और ये तो 0 है ही आपका। Now this into this minus this into this into this minus this into this. You know how to solve the 2 by 2 determinants. You will do these questions only when you know how to solve the 3 by 3 determinant and 2 by 2 determinant. Otherwise this questions will be difficult for you. ये question आपको difficult ही लगेंगे unless you have not done the solution of 2 by 2 and 3 by 3 determinants. So this into this minus this into this into this minus this into this, तो ये आ गया, इसमें your ये x cancel, तो this. Now you can arrange this by taking minus common. You know how to take minus common, so that you will get the right hand side. So this is the question number 9. So question number 8 and 9, do it 2 to 3 times because these are important questions. Now question number 10 and 11, question number 10 and 11 somewhat easy questions, not so difficult. Now if you see this question number 10 first part, if you add to row 1 second and third row, you getting the first row same, कॉलम में भी प्रॉपर्टी ला के यहाँ पे सेम ही आ रहा है, तो आदर यू यूज R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और यू कैन यूज C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब मैंने यहाँ पर रोज में प्रॉपर्टी लगाई है, तो 5x प्लस 4 फर्स्ट रो में आ रहा है, दिस प्लस दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस प्लस दिस, 5x प्लस 4 आई एम गेटिंग दिस, आई एम गेटिंग कॉमन, तो 1 1 1,
अगेन मेक दीज टू एलिमेंट जीरो, C2 माइनस C1, C3 माइनस C1. देखिए यहाँ पर मैंने पहले रो में प्रॉपर्टी लगाई थी, फिर कॉलम. हेयर यू कैन यूज दिस प्रॉपर्टीज. तो C2 माइनस C1, C3 माइनस C1, दीज एलिमेंट जीरो. अब यू एक्सपेंड अलॉन्ग इट्स फर्स्ट रो, इसको इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करिए, गेट 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट पार्ट, एंड दिस इज द सेकंड पार्ट. बिल्कुल सेम है इसका सेकंड पार्ट. ट्राई टू डू योर सेल्फ. आसानी है बिल्कुल सेम. रो में प्रॉपर्टी, फिर कॉलम माइनस 2 जीरो, एंड क्वेश्चन नंबर 11 ऑल्सो. R1 is equal to R1 plus R2 plus R3 common, then make these two elements zero and expand. See it. You can see this video 2 to 3 times to have a good hand over this. Now I'll do the remaining questions in the next lecture. Thank you.